So once again, I'm here, Dr. Prabhjeet, working as a senior consultant pediatrician at Healing Hospital, Sector 34, Chandigarh. Good morning, all our listeners and viewers. Welcome back. Today, I'll be discussing a very important thing which is oftenly asked and oftenly comes as a query to us: vaccinations. मैम, ये जो प्राइवेट में वैक्सीन लगती हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो गवर्नमेंट में नहीं दी जाती, क्या हमें वो लगवानी ज़रूरी है? So I'll just put forward a few queries and try to answer these. So it's important to understand that whatever the vaccination which is available in the government scenario is whatever the government can best do in the benefit of a population. So जो भी vaccines approval होती हैं, जैसे कि हमारी कमिटी होती है, what we say is advisory committee, जो हमें allow करती है कुछ vaccines या जिनकी importance हमें convey करती है, वो हम ट्राई करते हैं कि हम एक शेड्यूल में डाल दें ताकि उनको प्रॉपरली डालें, डिपेंडिंग अपॉन कि वो डिजीज कब ज्यादा होती है, कुछ एज ग्रुप में इंपॉर्टेंट है उसको वैक्सीन देना. वैक्सीन का मतलब अब हम सब बहुत अच्छे से समझ गए हैं, बिकॉज वैक्सीन्स आर वन जो हम बहुत सारे लोगों को देंगे और किसी भी डिजीज से बचा लेंगे. सो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की अगर हम लिस्ट पढ़ें तो इट इज नियरली इन्वॉल्व्स 10 to 14 डिफरेंट डिजीजेस, जिसमें हमारे गवर्नमेंट सिनेरियो में काफी सारी डिजीजेस के लिए कवरेज अभी तक अवेलेबल नहीं है. बट एज वी सी द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट एज वेल, ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट एज वेल, एंड दे हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड मेनी न्यू vaccinations or injections in their schedule. But still, government is working, but then we are working hand in hand with the public sector. Sitting in the private sector, we are just here to convey you what are the benefits of the additional vaccinations which are available. So I'll quickly enumerate those few. First, pneumococcal vaccine. Although it is now available in a few sectors of the government scenario as well, but pneumococcal vaccine is very important. 3 dosages at 6, 10 and 14 weeks, 1 month apart, 3 dosages should be given to all children along with DPT, what is available in the government sector, along with Rota vaccine. So अगर आपकी ये मिस हुई है, go and ask your doctor who is a private practitioner close to your place, or you can now ask your government public sector as well, because many centers have started delivering this pneumococcal vaccine as well. Another point, pneumococcal vaccine में आगे भी दो चीजें हैं कि pneumococcal 10 और pneumococcal 13. These are two kind of vaccines which will be described clearly by your doctor. So go visit and ask about the vaccination before the start of the vaccination. That means at 6 weeks. Immediately बाद में आती है 6 months पे and 7 months पे 2 dosages flu shots की. This is H1N1 or what we say influenza vaccine, which is very important. हम इसको swine flu के vaccination के तरह भी explain करते हैं parents को. So this is one vaccine which will prevent flu. What is flu? This is a kind of infection which is a viral infection and which can actually be lethal, जिसके साथ बहुत सारी complications भी associated हैं. Then एक vaccine हमारे schedule में आती है 6 months पे, typhoid vaccine, which is again a very important vaccine. Typhoid हम सब जानते हैं कि it is one kind of a disease which is basically through a water, पानी, गंदे पानी के यूजेस से हो सकता है. इट इज बैड हाइजीन, फीको ओरल रूट इसका ट्रांसमिशन है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस वैक्सीन के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करें. अर्लियर शेड्यूल में दिस वाज टू बी गिवन एट 10 months, बट नाउ इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एट 6 months ऑफ एज, बिकॉज जैसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करते हैं, माने बच्चे को खिलाना शुरू करते हैं, उसी पॉइंट पे हम वाटर का इंटेक बढ़ जाता है, यूज होना शुरू हो जाता है. सो हम चाहते हैं कि यहीं पर ये वाटरबॉर्न डिजीज का जो वैक्सीन है वो हम दे दें. इट इज गिवन एट 6 months. Another important vaccine which comes at 9 months is mumps. जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में एक वैक्सीन अवेलेबल है, दैट इज मीजल्स एंड रुबेला, MR के साथ अवेलेबल है. But in the private sector, it is available as MMR, which includes measles, mumps, rubella. So it is what we call, अगर हम local language में कहें तो इसको कनपेड़े भी कहते हैं. It is one kind of actually a very disturbing and a viral disease which is very disturbing and long standing. It has its own complications, so which I'll not enumerate here. I'll quickly go through all the vaccines. So MMR एक बहुत important vaccine है जो थोड़ा different है हमारे MR vaccine से जो हमें public sector में मिलता है.
Then comes another vaccination at 1 year, which is hepatitis A. Hepatitis A is again a kind of a waterborne disease, which is very important disease per se as a disease burden, because इसमें बहुत ज़्यादा cases involved हैं. As ये water से होता है, sometimes even once somebody is infected in the family, और poor hygiene की वजह से ये सबको एक घर में भी हो सकता है. And as we all know, this is again related to the liver. It not only hampers your present but also affects your long-term liver health. After the first year, at 15 months, there is another vaccine which is there, which is very important vaccination, chickenpox, or what we say varicella vaccine, which is not available in the public sector. It is important as it not only have its own complications but also leaves marks for long. So chickenpox का vaccine हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है. आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं और उसके बारे में और जानकारी उनसे ले सकते हैं. बट ये जो वैक्सीन हम बता रहे हैं, इनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपको पता होना चाहिए दीज आर अवेलेबल देयर. बट हम एक्चुअली इस कंसेप्ट से बाहर निकालना चाहते हैं आप पेरेंट्स को कि जो वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में हो रही है वो कंप्लीट है. ऐसा नहीं है. देयर आर मेनी एंड्स व्हिच आर येट लेट लूज, सो वी रियली वांट टू keep all those or take care of all those ends. I hope I have touched up all the important vaccines, but then still another are Japanese encephalitis, meningococcal vaccine and cholera vaccine. Although they are also of use, but then they are available in the market as well. But then this is again for the parents to discuss one-to-one with their doctors and get these vaccinations done if you are coming from an endemic area, or if your child is prone to certain kind of diseases, being a special child. So it's very important to discuss all these vaccines as a part and parcel of your vaccination program. If even it is being done in a public sector, do understand there are still some points which are to be touched or which are left unturned by the government. So go and visit your private practitioner and ask about all these vaccines.